Dear members, good morning and a warm welcome to 51st Annual General Meeting of RITES Limited being held through video conferencing. For the smooth conduct of the meeting, the video audio of all members will be in mute mode. The audio and video will be open only to those members who have pre-registered themselves as speakers. Please note that as per the requirements, the proceeding of annual general meeting will be recorded and be hosted on the website of the company. I now hand over the proceeding to Mr. Ashok Mishra, Company Secretary and Compliance Officer of RITES Limited. Over to you, sir. Thank you, Yusuf. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of RITES Limited, I, Ashok Mishra, Company Secretary and Compliance Officer, welcome you all at the 51st Annual General Meeting of RITES. We hope you all are doing fine. This 51st Annual General Meeting of RITES has been called through video conferencing / other audiovisual means in accordance with the notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. I would like to inform you regarding the participation process of this meeting. The facility of joining this meeting through video conferencing is being made available for members on first come, first serve basis. Since there is no physical attendance of the members, the requirement of appointing the proxy is not applicable. The register of members and register of directors and key managerial personnel and their shareholdings are open for inspection. The remote e-voting, as mentioned in the notice of AGM, has been conducted from Saturday, September 20, 2025 to Monday, September 22, 2025. In this regard, the company has appointed Shri Mukesh Chandra Jain, proprietor of Messrs. JMC and Associates, practicing company secretaries as scrutinizer to scrutinize the votes. Members who have not casted their vote during remote e-voting process can cast their vote through voting in the course of meeting for an hour from the conclusion of the meeting. All the members who have joined this meeting are by default put on a mute mode by the host to avoid any disturbance and ensure smooth and seamless conduct of the meeting. Once the question and answer are start, the moderator will announce the names of the shareholders one by one who have registered themselves as speaker shareholders. After announcement of the name, the speaker shareholder will thereafter be unmuted by the host. Shareholders are requested to switch on the video. If the shareholder is unable to join through video mode, the speaker can speak through audio mode. While speaking, the shareholders are requested to use their earphones so that they are audible, and also it is requested to minimize the background noises. Kindly ensure that Wi-Fi is not connected to any devices and no other background applications are running. Please ensure the proper lighting so that video is clear. If there is connectivity problem at the speakers end, we will ask the next speaker to join. Once the connectivity improves, the earlier speaker shareholder will be called again to speak. We would like to request the shareholders to limit their question to maximum 2. During the annual general meeting, if the shareholder faces any issue, he or she may contact the helpline numbers as mentioned in the notice of AGM. The dedicated toll-free number for investors regarding any queries or issues during the AGM is provided in the notice of AGM. Thank you for joining this meeting. Now I request our CMD sir, Shri Rahul Mittal sir, to take the proceeding further. Over to you, sir. Thank you, sir. Good morning, shareholders. Namaskar. I welcome each one of you to the 51st Annual General Meeting of the company. I hope that you and your families are in good spirits. As a requisite quorum for this meeting is present, I now call the meeting to order. All the directors of the company have joined the meeting, and I'd like to introduce them. Shri Satish Singh, EDME, ENHM and Project Railway Board, President of India's nominee. Shri Shailen Singh, Government Nominee Director and Chairman of Stakeholders Relationship Committee. Shri Krishna Gopal Agarwal, Director Finance and Chief Financial Officer. Shri Deepak Tripathi, Director Technical and Director
Projects Additional Charge. Shri Rajbir Sharma, Independent Director and Chairman Audit Committee. Shri Dineshanand Goswami, Independent Director and Chairman Risk Management Committee. Srimati Purnima Karkatta, Independent Director and Chairperson, Nomination and Remuneration Committee. Shri Likha Togu, Independent Director and Chairman CSR Committee, was joined through VC. Our auditors and scrutinizers have also joined the meeting through video conferencing. CA Shri Simranpreet Singh, representing Messrs. Pawan Puri and Associates, statutory auditors of the company. CS Shri Akhil Rohatgi, representing Messrs. Akhil Rohatgi and Company, secretarial auditor of the company. CS Shri Mukesh Chand Jain, proprietor of Messrs. JMC and Associates, practicing company secretaries as scrutinizer for the AGM. I thank all the members for joining this meeting, being held through video conferencing, pursuant to the notifications and guidelines issued by the MCA and SEBI. The company has taken the requisite steps to enable the members to participate and vote on the items being considered at this meeting. I hope that all of you have received the integrated annual report and the notice of the meeting well in time, and I consider it as read. As your company enters the next 50 era, I take immense pride in a legacy that not only inspires, but empowers us to uphold our resolve. We shape what shapes lives, with purpose and progress guiding the way. FY 2025 was not a year defined by legacy alone, but how we listened, learned, leveraged our strengths, and began future-proofing the organization in response to a business ecosystem that is evolving faster than ever before. We began the year facing strong headwinds. Policy shifts tested our long-standing position in the quality assurance vertical and in our export business. Yet, we saw these not as setbacks, but as catalysts spurring us on to adapt. In the year that went by, your company achieved a consolidated revenue of 2,324 crores against 2,539 crores in FY24. The operating revenue, excluding other income, stood at 2,218 crores against 2,453 crores in FY24. This decline, primarily due to reduced contributions from two high-margin business segments, quality assurance and export, impacted overall profitability. The profit before tax stood at 565 crores against 670 crores in FY24, while profit after tax was 424 crores compared to 495 crores in FY24. Still, this period of challenge became a catalyst for strategic reset, strengthening our consultancy capabilities, improving execution, and pursuing big ticket opportunities. And the outcome? Project consultancy emerged as a powerhouse, recording its revenue of 1,133 crores, while our turnkey and leasing verticals notched up revenue of 797 crores and 150 crores, respectively. In quality assurance, we rebuilt from the ground up, broadening our client base,
entering new industrial sectors, and reclaiming ground through tailored strategies. Your company continued to uphold its position as a one order a day organization and added another feather to its cap by securing at least one export order in every quarter, reinforcing its capability to deliver increasingly competitive, multi-sectoral, complex mandates. Notably, after nearly 3 years, the export outlook gained momentum, driven by sustained and focused international outreach. Our highest ever order book of 8,877 crores is more than just a milestone. It's a reflection of the trust we've earned and the performance we've delivered, and our continued relevance in a changing world. We also expanded our geographical footprints by signing MOUs with key players and opening an office in the UAE, further reinforcing our global aspirations. Reaffirming your company's unique strength in offering end-to-end expertise across nearly all domains of infrastructure consultancy, several key projects were completed this year, and these stand as strong examples of our multi-sectoral capabilities, global presence, and ability to deliver diverse, high-value solutions. Even amid margin pressures, your company upheld its track record of delivering among the highest dividend payout ratios, all while preserving a robust balance sheet and net worth. The Board of Directors has recommended rupees 2.65 per share as a final dividend, in addition to the 3 interim dividends totaling rupees 4.90 per share, which have already been paid during the year. The total dividend of 363 crores at rupees 7.55 per share on accrual basis takes the dividend payout ratio to 95.4% of the profits earned. Your company's subsidiaries and joint ventures, RMC Limited, SRBWIPL, and RAPL, made significant contributions to overall performance in FY25. RMC Limited recorded a total revenue of 140 crores and a profit after tax of 79 crores. It continued to play a key role in Indian Railways' net zero mission by facilitating the procurement of 18.63 billion units of green energy during the year. SRBWIPL reported a revenue of 359 crores and a profit of 22 crores. And meanwhile, RAPL strengthens its international presence by actively pursuing opportunities across multiple sectors in the African region. Our strength lies in our people, and we are investing in them. Through various initiatives like IT Ready, Skill Ready, and AI Ready, we are building a future-ready workforce equipped with digital, functional, and analytical capabilities. With platforms such as Samvad, a peer-led knowledge-sharing series, and Saksham, our curated learning portal,
We are fostering a culture of collaboration, continuous learning, and domain excellence across team rights. Changing Lives, our flagship CSR initiative, reflects our commitment to driving inclusive and sustainable development, spanning critical areas such as healthcare, women's empowerment, and skill building. With a focus on aspirational districts, it aims to foster long-term transformation. With a contribution of 13.10 crores in FY25, your company reaffirmed its resolve to create enduring value beyond business. Anchored in a strong value system, your company takes pride in upholding the highest standards of corporate responsibility. By consistently adhering to laws and regulations, embracing global best practices in governance, and cultivating a culture rooted in compliance, accountability, transparency, and ethical conduct, RITES has set benchmarks in corporate integrity. This unwavering commitment was duly recognized with prestigious honors. The ICAI Award for presented annual report. The world of infrastructure is transforming. We realize this and are equipping ourselves for it. To thrive in this new world, we've embraced a strategic framework, ADAPT, 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 to secure the niche spot as a go-to program management consultant for infrastructure projects across sectors. ADAPT is more than just an acronym for us. It's a mindset. It's how we acknowledge change, develop cutting-edge capabilities, and craft tailor-made solutions for every geography we work in. It stands for A, for acknowledge that the business dynamics are changing. D, for develop manpower and resources to compete in the changing environment. A, for align, to offer tailor-made solutions to the client. P, for partnerships across geographies. And T, for technology to make RITES future ready, embracing 4IR. ADAPT, adapt. Our achievements reflect the unwavering support of the Ministry of Railways and the trust of our stakeholders. As we move forward, the strength of our capabilities, the commitment of team rights, and the guidance of our board remains our driving force. I extend my sincere gratitude to the ministry, our esteemed board, clients across geographies, valued investors, and the 2,700 plus members of Team Rights.
your trust and shared vision continue to shape our journey. As we move ahead, we are adapting from a consultancy that delivers answers to a partner that asks better questions. And we remain firmly committed to being more than consultants, because at RITES, we shape what shapes lives. Thank you. We now begin the question and answer session, and I request the company secretary to take the proceedings further. Thank you, sir. I request moderator Mr. Yusuf to call the shareholders one by one who have shown their interest and registered themselves as speaker shareholders. Thank you, sir. We will now go ahead with question and answer session. Before we go live with the Q&A, here are some points to note for your convenience. Members are requested to keep their questions brief and specific. We request you to please unmute your audio and turn on your video and proceed with your questions. Each shareholder will have 2 minutes for their questions. Give us a moment while we allow speaker shareholder to interact with the management. Our first speaker shareholder is Urmila Jain. Please accept the prompt on your screen. Unmute your audio and video and proceed with your question. हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, नमस्कार। हाँ चेयरमैन सर नमस्कार, और सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं उर्मिला जैन। सर सबसे पहले तो मैं 51वीं एजीएम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर आपकी स्पीच सुनी, बहुत अच्छा लगा। आपने कंपनी के बारे में खुलकर बताया है, वर्तमान और भविष्य के बारे में। सर मैं आज के सभी रेजुलेशन का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। सर हमारे शेयर का प्राइस मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी कंपनी ने बोनस भी दिया, ये हमारे लिए सराहनीय की बात है। सर एक बार फिर उत्साहजनक डिविडेंड और मजबूत शेयर होल्डर रिटर्न पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर हमारी कंपनी ने 2025 में सभी चुनौतियों के बावजूद भी कंपनी ने 95% लाभ को डिविडेंड के रूप में दिया है, शेयर होल्डरों को डिविडेंड के रूप में दिया है। ऐसा लाभांश देखकर हमें बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमारी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आगे भी अच्छा करती रहेगी। सर दूसरा, सर आगे जब हमारी कंपनी 8,877 करोड़ की ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदलेगी तो निवेशकों को किस रेंज में डिविडेंड पे आउट रेशो की अपेक्षा करनी चाहिए? सर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। और 2 सालों में हमारी कंपनी को हम कहां तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे? हमें गर्व है कि हम राइट जैसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे वीसी के माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया। ये सब हमारे मैनेजमेंट और स्टाफ की मेहनत का फल है, जो आज हमारी कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत सुनहरा रहेगा। सर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आज भी हम आपके साथ हैं और कल भी हम आपके साथ रहे हैं। जो मेहनत और लगन से काम करते हैं, जो मेहनत और लगन से काम करते हैं, उनके लिए मंजिलें दूर नहीं है, उनके लिए मंजिलें दूर नहीं है। आने वाले नवरात्रे और सभी फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद मित्तल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, आपके बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स हमारे टीम के लिए। देखिए आपने सही कहा, लास्ट ईयर हमारा बहुत चैलेंज से फिर भी हमारी टीम इसमें पूरी लगी रही, जोरों से चैलेंज को हमने फेस किया। और हमारा मेन फोकस था कि ये जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है नॉमिनेशन से कॉम्पिटिटिव में, उसमें हम लोग
ऑर्डर्स तमाम ले पाए, नए नए स्ट्रैटेजी में कर पाए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स ले पाए। इसीलिए आपने देखा हमारे हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक हुआ। और अब जो ये साल है जिसमें हमारा फोकस है, ना केवल और ऑर्डर्स भी आते रहें, परंतु ये जो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक हमने साल को, पिछले साल को एंड किया, उसके एग्जीक्यूशन पे फोकस रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग इस साल डेफिनेटली पिछले साल से आप देखेंगे कि रेवेन्यू में कंपैरिजन में डेफिनेटली ग्रोथ होगा। और आगे अगले साल, अगले 2 साल में भी तो लगातार आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखेंगे। तो हमारा फोकस ना केवल और फ्रेश ऑर्डर्स में जो हमने ट्रेंड मेंटेन किया है, 1 ऑर्डर अ डे कंपनी हमने मेंटेन करीब अब 1.25 साल से करा है, इसको हम मेंटेन करते रहेंगे। जो हमारी 8,000, करीब 8,900 करोड़ की ऑर्डर बुक 31 मार्च को थी, हमारा अगले टारगेट है कि इसको हम जल्द से जल्द 10,000 करोड़ तक ले जाएं। और जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हुए, और अब रेवेन्यू में आप बढ़त देखेंगे ईयर ऑन ईयर। जहां तक डिविडेंड का सवाल था, हमारा अब देखिए बिजनेस, बेसिक बिजनेस मॉडल है कि हम एक लो कैपेक्स कंपनी है, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट हो वो हम अपने शेयर होल्डर्स से बांटें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा ट्रेंड रहा है ऑफ अबाउट 90% प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो, हम आगे भी इसी ट्रेंड को बरकरार रखेंगे। आपने Q1 भी इस साल में देखा, हमने वही ट्रेंड को मेंटेन किया है, और हम ये मेंटेन करते रहेंगे आगे वाले क्वार्टर्स में और आगे साल में। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Ashok Subramaniam, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Mr. Subramaniam, please accept the prompt. Hope I'm audible and visible. You are Yes. audible, sir. Okay. Yes. Morning, Mr. Yes, we can hear Good you, Mr. morning. Subramaniam. Go ahead. Yeah, Sarvebhya Namaskaraha. So thank you for first of all, my hearty congratulations to all the board members, the employees, the stakeholders, and all the associated fellow shareholders and everybody for an excellent result and a sustainable progress of the business of the organization. And thanks for the secretarial departments for sharing the most valuable coffee table book called Atulya. And have congratulations to the team who has done and giving some thought for taking out quotes from Bhagavad Gita and giving an essence of Sanskritam. Thank you very much. And now I was wondering that I am speaking from Coimbatore. I am a retired professional from oil industry with 37 years experience in safety. And now I have I have done an upskilling of myself in the last 1 year of post retirement in CSR leadership through a course with XLRA Jamshedpur in conjunction with Tata Steel Foundation. So now I have a flyer on CSR. If you look at that angle, I was thinking at that there are 13.3 crores is the value spent on CSR with 2 lakh plus beneficiaries written as. So the days are gone to call it as beneficiaries. Now, as per the new CSR norms, people talk about the lives transformed. So maybe we can look at that angle and start reporting in that fashion from the next time onwards. And in case I can be of any help to you in these aspects, kindly keep my details and reach out to me. I will be happy to share with you and take your way. In that aspect, now the organization, many organizations are going into this concept called CSR volunteering with the help of the employees itself. And it not only motivates, it not only gives some kind of a motivation for the employees to go reach out to some villages or to some schools and share something and all those things. In that aspect, I have also taken up a pro-engage program with one of the leading groups in the country. As a CSR professional, in that I go to one Adivasi school and take up some STEM programs.
So when I approach them, I find that it's quite vibrant now compared to those days when we were young and there was hardly any knowledge about industry or anything. Nobody goes there. So after the graduation, you just apply for jobs and apply, no reply. Okay. So nowadays things have changed. So this is the way the country is prospering, and we have a big vision by 2047. And to build up that vision, what the fundamental need for us is the human capital, and especially the engineering capital. And if you look at it, the RITES is an organization. It is basically a strong organization with respect to a lot of involvement of civil engineering aspects, interest to specialization in transportation and other things, all those things put together. So by default, hardly any youngsters take civil engineering as the course these days. So I was thinking, why don't we nurture the young minds now itself? And maybe if you can share some of the Atulya book soft copy or something, when I go and interact with them, I can share with them, see, these are all the things you can do tomorrow. So when you create a culture in the minds of the youngsters that this is what they can do, they can be contributing to this kind of thing, say something like a Pamban Bridge or something like a Navasheva or something like whatever it is. You have got a lot of things in that Atulya. So that will probably develop more people to take towards this thing. Similarly for engineering colleges and other graduate colleges and all those. So this was one school of thought in my mind. I thought there is no better organization than RITES to share these things. Okay, so I thought I shared the same thing in RVNL also. So in that aspect, I think probably you can take a note of it. Now coming to the point, now further, the railway, we are in the business of railways, airports, highways, and everything. There are two aspects which the country is lacking to build up in the design stage itself and to take it forward. One is the geriatric aspects, and second is the PWD aspect. That PWD means persons with disability. So when I am a voracious traveler in the highway, whenever I travel with my elderly parents and elderly people, it's a Herculean task when they have to visit some places for the natural call or anything unseen 2 hours or something. We hardly have any standards. So we have to depend on roadside wayouts and something which are not this thing. So whereas in comparison to the many other aspects of restrooms and other things in the world, other parts of the world, something we need to build up. We are very bad in that angle. So probably we can develop some kind of a standard, and even the coaches and everything we build also, it should be like that, what I felt. And then the second thing what I felt was that now the considering the actions which we do, generally the engineering companies and the consulting companies doesn't get the limelight in the market. So the only way to increase the market capitalization, if you look at it, our share price has gone down 25% is down between the last AGM and this AGM. So that means the market capitalization is going down. When the market capitalization goes down, the credibility goes down. So the only way, I thought one idea may be that we have to keep more promotional things in the media, and maybe some kind of road show, or maybe some kind of a what do you call podcast or something like that. We can try it, sir. So this is what is my suggestion. And with that, I thank you for giving me an opportunity. And also, I look at the SWOT analysis in the market. There are 10 weakness which is listed in the many trading platforms, and a few of them I will just mention so that the management can look at it and ponder on it, so that our visibility increases and market comes. So whatever you dividend you give, that is one time. Every individual will expect the share prices to go up. So in that aspect, when the company is performing well, the business is ethical and it is sustainable, I wonder why the market is not going up, what the share price is not getting reflected. Probably these are all some actions the management and the government can look at it. Okay. So when is the insufficient use of capital to generate profits? It says ROC is on a declining trend in the last 2 years. And the second thing is the assets ROA is declining. Then cash generated from core businesses are coming down. So that are all the things. Annual net profit is declining. These are all certain comments which is appearing in the market, many market portals. So maybe we can address on that and improve upon that. It will be better.
And once again, thank you for giving me an opportunity, and wish everyone a happy time ahead. And continue to be in touch with me. If I can be of any help as a volunteer, I would like to share my things and help it with you, the organization, and use my spare time for the goodness of the nation and goodness of the country. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Subramaniam. I think your fondness and trust in us and faith in our organization has made you come up with some very valuable suggestions. Your points are well taken and noted, and all of them are very, very important and valuable. And I assure you that we will look at them, whether it's the employees' participation in CSR, the sharing of Atulya, whether it's looking at the aspect of the geriatric or PWD aspects in design, whether it is promotional road shows or an examination of our weaknesses in the SWOT analysis. All your points are very well taken, and I thank you for your valuable inputs. Thank you, Mr. Subramanian. Thank you. I now invite our next speaker shareholder, HS Patel, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Ms. Patel, please accept the prompt on your screen. Ms. Patel, please accept the prompt on your screen. As there is no response from the current speaker shareholder, I would now request our next speaker shareholder, Jasmeet Singh, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Jasmeet Singh, I would request you to please accept the prompt on your screen. Jasmeet Singh, please unmute your audio and video. We are not able to hear you. Request you to please unmute your audio. Am I audible? Sir, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ Yes, जी sir. जी, अब आ रही है आपकी आवाज जी. नमस्कार जसमीत थैंक जी. यू. नमस्कार जी. एक्चुअली ये जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये मैंने शेयर करना चाहूँगा कि जो है ना, इट टेक्स इट्स टाइम इफ वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम आवर नोटबुक, बट फ्रॉम ए मोबाइल वो आसानी से हो जाता है. बट मोबाइल में बीच में कॉल आ जाए तो फिर वो बात करने का जो है ना, वो अवसर जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता. तो इंटेंशन यही होती है कि हम जो है वो आपसे जुड़ें और एक सीमलेस हमारी बात हो पाए. अब इसमें थोड़ा टेक इनको इम्प्रूव करना है और मेरे को आशा है कि ये जरूर इसके ऊपर काम करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट माय नोट. रिस्पेक्टेड CMD साहब, राहुल मित्तल जी, KMPs, independent directors, and co-fellow shareholders. I am Jasmeet Singh attending this AGM 51st. और मुझे बहुत खुशी है कि जो है ना, हम जिस जो ईयर अंडर रिव्यू में जो हम अपने रिजल्ट्स दिए हैं उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ. ये अब एक ना हमारे को एक आप जो जैसे जो है ना, ये जितने फोकस से जो काम हो रहा है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो क्वार्टर्स और ईयर्स में ये हम कहीं और आगे जाएंगे. अब देखिए, आपने अपना सर ओपनिंग में आपने इतना अच्छा हमारे को बताया. तो और जो हमारी जो एक एनुअल रिपोर्ट है, इट इज सो एग्जॉस्टिव दैट देयर इज
no, there is nothing which one can question as far as the business strategy is concerned, and I have full faith in the leadership team. मेरे को एक छोटा सा सर, मेरे को सिर्फ ये आप बता दीजिए कि जो हमारे ऑर्डर बुक साइज जो है वो हमारा अभी क्या है, और पिछले वर्ष से वो हम कितने उसमें ग्रो किए हैं। एक वो एक हमारे को ना दिशा देता है कि हम जो है वो कितनी हमारी प्रगति आने वाले वर्षों में हमारे को मिलेगी। दूसरा ये कि एक नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपेंशन, तो वैसे कॉस्ट कटिंग तो वैसे वो हमारे उसमें रहती ही है अपने जो है एजेंडा में, लेकिन विदाउट कटिंग कॉर्नर्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, हम जो है वो अपने मार्जिन को हम कैसे जो है वो और बढ़ा सकते हैं, मे बी बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। अगर हम इस साल में हम बढ़ा पाए तो वो बहुत हमारे को ना एक अच्छा जो है वो हमारी बैलेंस शीट को प्रदान करेगा, एक बल प्रदान करेगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट उसी को ही नेट प्रॉफिट के ऊपर ही सारी जो है ना वो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हैं। तो और एक सर हमारे को सीएसआर के बारे में जरा जरूर बताइएगा। अभी जो है फ्लड्स देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में हमने इतने देखे हैं, अब कलकत्ता में भी आ गए हैं फ्लड्स। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर कैसे हम कर रहे हैं। अगर हम पीएम रिलीफ फंड में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक अपना साइट बनाई है जिसमें कि पंजाब को उन्होंने उसके ऊपर वो जो है ना वो फंड्स की जो है वो उगाही कर रहे हैं। तो क्या हम उसमें योगदान कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइएगा। बाकी अधूरा है कि अगर ये पक्ष की अगर हम जो है ना ये हमारे जो कंप्लायंस चीफ जो है अशोक मिश्रा जी, इनकी अगर हम ना तारीफ करें, क्योंकि इनके साथ जो हम कभी भी कोई कम्युनिकेशन मेल भेजते हैं, कोई अगर कोई हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे को मतलब बखूबी जो है ना वो प्राप्त होती है। और ये एक जो अच्छे कंप्लायंस का जो एक वो जो है ना ये वो दिखाता है। तो और उनकी टीम जो है प्रज्ञा ने हमारे को जो है फोन करके थोड़ा सा वो किया, अवगत करवाया कि मीटिंग है जी, आप जरूर ज्वाइन करें। उन्होंने हमारी साइट सर्टिफिकेशन की। तो ये सब बहुत अच्छे कंप्लायंस है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, और आपकी उसमें मैं ये नॉलेज में मैं लाना चाह रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। मेरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, आने वाले वर्षों में ये जो है एजीएम ये तो हाइब्रिड मोड पर करें, फिजिकल आपसे मिलने का अवसर प्रदान होगा। दूसरा ये कि पहले करें, जुलाई में करें, और हद से हद मतलब 15 अगस्त से पहले आप जरूर कर दें, क्योंकि किताबें हमारी एनुअल वो जो रिपोर्ट है अकाउंट्स है वो हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये डिले जो है ना वो एक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो इन सेशंस में होती है ना वो ठीक तरह से नहीं हो पाती। अभी 2 सेशन मेरे और अभी खुलने हैं, तो वो मेरे को ध्यान जो है ना हर जगह फिर रहता है। तो ये आपसे गुजारिश है सर। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। आई एंड माई ग्रुप ऑफ मेंबर्स सपोर्ट ऑल योर रेजोल्यूशंस। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत जी, आपके काइंड वर्ड्स और एनकरेजमेंट के लिए। ऑर्डर बुक हमारा जो 31 मार्च को था, ये जैसा आपने देखा करीब 8,900 करोड़ था, जो पिछले 31 मार्च को केवल 5,700 करोड़ था। और हमने ये साल एंड किया द हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक। इनफैक्ट पूरे साल भर में 544 ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू 5500 करोड़। मैं रिपीट करता हूं, 544 ऑर्डर्स टोटलिंग टू 5500 करोड़। तो अगर आप देखें, जो पिछला साल शुरू हुआ था उसमें ऑर्डर बुक थी 5700 करोड़, और एक साल में ही फ्रेश ऑर्डर 5500 करोड़ के जुड़े, मतलब इक्वलेंट टू दी ऑर्डर बुक हमारा फ्रेश इनफ्लो हुआ। एंड वी एंडेड द ईयर 31 मार्च with the highest ever order book of about 8,900 crores, which is showing, as you correctly said, the trend. और हमने 1 order a day का रिकॉर्ड बरकरार रखा। ये साल भी जो पहला क्वार्टर गया है, we have maintained 1+ about 1.2 के रेंज में स्ट्राइक रेट, और हमारा ऑर्डर बुक इसी स्ट्राइक रेट पे चलता रहेगा। ये हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है जो हमने रीस्ट्रेटेजाइज पिछले 1-2 साल में किया है टू टैकल द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड जैसा मैंने कहा, हम वी आर टारगेटिंग डाउन द लाइन टू रीच आवर नेक्स्ट माइलस्टोन कि हम 10,000 करोड़ ऑर्डर बुक पहुंच पाए। जहां तक आपने नेट प्रॉफिट की बात की, हाँ, हमारा नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर मार्जिन और दोनों एक्चुअल प्रॉफिट में हिट था। और दो हमारे मेन जो हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटर्स थे,
क्वालिटी एश्योरेंस बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हुआ। दोनों में हमने रीस्ट्रेटेजाइज करके अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए हैं, उनकी शिपमेंट शुरू हो गई है। ऑलरेडी 2 लोकोमोटिव चले गए हैं और ऑल लोकोमोटिव जाने के बिल्कुल कगार पे हैं। तो वी आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, और जो क्वालिटी एश्योरेंस में भी हमने चेंजेस किए हैं न्यू क्लाइंट से, तो हमारा जो नेट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और एक्चुअल प्रॉफिट आपको डेफिनेटली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा। सीएसआर के आपके सजेशंस आर वेल टेकन, एंड डेफिनेटली जो जो एरियाज आपने पॉइंट आउट किए, हम उस एरियाज में सीएसआर में डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। और आपका फाइनल सजेशन दैट हम एजीएम को और थोड़ा जल्दी करा पाए, that also point is well noted. We will see how best with all necessary clearances and audit reports, how soon we can expedite it. बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत जी। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Dilip Kumar Jain. Please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Mr. Jain, please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Mr. Dilip Jain, I would request you to please accept the prompt on your screen. As there is no response from the current speaker shareholder, I would request a next speaker shareholder, Manjeet Singh, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Mr. Manjeet Singh, please accept the prompt on your screen, sir. My audible? जी Yes, sir. नमस्कार मंजी जी, आई ऑर्डर राइट की मैनेजमेंट टीम, स्केट्रियल टीम और माई को शेयर होल्डर, मैं सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे के अंदर जिस तरह से प्रोग्रेस रही है, उसी तरह से हमारे को राइट्स में ऑर्डर मिले हैं। आगे 24 मंथ का हमारा क्या प्लान है, रोड मैप क्या है, थोड़ा आप इस बारे में बताइए। हमारा व्यापार शेयर बाजार में लिस्टेड है, हमारा बीएससी का कोड 541556 और राइट सिंबल है। उसका पूरा मान सम्मान करते हुए स्केट्रियल डिपार्टमेंट ने वैलेंटाइन बैलेंस शीट बनाई है और हमारे बोर्ड को हमारे साथ रूबरू करा है। आगे आप तरक्की करो, इसकी हम आपसे आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जो आज का समय हमने आपके साथ व्यतीत किया है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट को आने वाले टाइम में मजबूत करेगा। थैंक यू फॉर द मैनेजमेंट टीम, थैंक यू फॉर द स्केट्रियल टीम। धन्यवाद मंजीत जी। हमारा अगले इस साल और अगले साल, अगले 2 साल का जो रोड मैप है, हमने जो लास्ट ईयर हमारा की फोकस था, रीस्ट्रेटेजाइज करके ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्डर ले पाए अक्रॉस सेक्टर्स, देश में विदेश में। एक्सपोर्ट में जो हमारा करीब 3 साल से ऊपर से कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिले थे, हमने पिछले 5-6 क्वार्टर में लगातार हर क्वार्टर में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया। करीब 1400 करोड़ की अब हमारी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक हो गई है। हमारे जो पहला ऑर्डर बुक मोजाम्बिक का 10 लोकोमोटिव का मिला पिछले करीब 3 साल के गैप के बाद, उसके ऑलरेडी लोकोमोटिव जाने शुरू हो गए हैं। तो अब हमारा ना केवल इस साल और अगले साल और ऑर्डर्स लेने का रोड मैप है, तमाम देश में विदेश में हम एक्सपैंड कर रहे हैं। न्यू ज्योग्राफीज में, मिडिल ईस्ट में हम काम ले रहे हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। और उसके साथ साथ हम लोग जो ऑर्डर बुक है उसके अब एग्जीक्यूशन में फास्टर एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एग्जीक्यूशन, हमारा फोकस ऑन 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 क्वालिटी एंड इम्प्रूव्ड रेट ऑफ एग्जीक्यूशन, इस पे, सो दैट रेवेन्यू में और प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बढ़त दिखे, इसमें हमारा पूरा फोकस है। ये हमारा बहुत अब सस्टेन्ड फोकस अगले 1 से 2 साल, अगले 24 महीने का रहेगा।
Thank you. I now invite our next speaker shareholder, HS Patel, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Ms. Patel, please accept the prompt on your screen. HS Patel, I would request you to please accept the prompt on your screen. As there is no response from the current speaker shareholder, I would now invite our next speaker shareholder, Sanjeev Kumar Sain, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Mr. Sanjeev Sain, please accept the prompt on your screen. No response from the current questioner. I would move on to the next questioner. Hello. Hello. हाँ Yes, जी sir, you are audible, sir. Please go ahead. Hi. Hi, I'm Sanjeev Swain. Good morning, Chairman. जी मॉर्निंग मॉर्निंग गो अहेड Hi, good morning, board member and my fellow shareholders. It is honor to join this meeting online, and I thanks Chairman sir कि हमारा जो भी questions हमने सोचा हुआ था, तो आपका speech आपने इतना transparency के साथ दिया है, so you given all the answers in your speech. So I would like to appreciate the management for ensuring transparency and for the company's steady performance in the challenging years. The innovation and leadership show have strengthened our position in the market. As a shareholder, we look forward to the sustainable growth, continued transparency, and value created for all the shareholders. मैं अभी आपसे जो in conclusion, I wish say that I am deeply optimistic about our future with strong leadership, dedicated employee, and the unwavering trust of the shareholders. I'm confident our company will continue to scale the new highs in the years to come. Together, we are not only building financial value, but also create a legacy of trust, responsibility, and excellence. So, thank you so much, sir. Thank you. The best wishes for the company's continued success. Thank you so much, sir. Thank you, Shahin Saab, for your very kind and encouraging words. I must tell you, this is a very, very encouraging for our entire team. And I assure you from our team side that as we go to the next 50 years, we are committed to touch even greater heights. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Gagan Kumar, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Gagan Kumar, please unmute your audio and video and proceed with your question, sir. हेलो, कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी है और आने वाले टाइम के अंदर हमारा टर्नओवर भी बहुत अच्छा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि टर्नओवर के साथ साथ जहाँ हम थोड़ा अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देंगे, हमारे मार्जिन किस तरह से बढ़ेंगे, थोड़ा आप इस बारे में बताइए। ईपीएस कितना आगे रहने की उम्मीद है, अधूरा रहेगा वो पक्ष अगर जिक्र ना करें उसका। सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट जिनकी मेहरबानी से हम आपसे जुड़ पाए हैं, थैंक यू फॉर द सेक्रेटरिएट टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद गगन जी.
ये देखिए, हमारा जो अब ऑर्डर बुक का ट्रेंड रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा करीब 2/3 से ज्यादा हमारे ऑर्डर्स, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हो, अब कॉम्पिटिटिव बेसिस पे आ रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे, चाहे वो एबिटा मार्जिन्स हो या पैट मार्जिन्स हो, इनमें करीब एवरेज काफी, दोनों में ईयर ऑन ईयर, इवन हिस्टोरिकल जो फिगर्स रहे हैं उनमें कमी आई है। तो अब हमारा जो एक परसेप्शन है और जो हमारा फोरकास्ट है कि हमारा एबिटा मार्जिन करीब 20 से 21% के बीच में और पैट मार्जिन करीब 15-16% के रेंज में रहेगा। तो इसीलिए अब हमारी कोशिश है कि हमारा ऑर्डर बुक जैसे इतना बढ़ रहा है और आगे बढ़ता भी जाएगा, तो रेवेन्यू में हमारा फोकस है, सो दैट इवन विद दिस कम मार्जिन हम आपको एक्चुअल प्रॉफिट और दे पाए। तो ये हमारी बिल्कुल अब स्ट्रेटेजी रहेगी कि ऑर्डर बुक, जो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है, उसको हम बढ़ाते भी रहें, एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन पे फोकस करें, सो दैट टॉप लाइन में हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन में आपको इस साल टॉप लाइन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखे, सो दैट ग्रेजुअली आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी आगे बढ़े, इवन विद द लेसर मार्जिन्स। Thank you. Our next speaker shareholder is Mr. Manoj Kumar Gupta. Please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Hello. जी Good नमस्कार। morning. Namaskar. Good morning, respected Chairman, Board of Directors, fellow shareholders. My name is Manoj Kumar Gupta. I have joined this meeting from my residence city of Joy, Kolkata. सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है पिछले साल भी आपने ज्वाइन किया था, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना फेथ और ट्रस्ट है हमारी कंपनी में कि आपने ज्वाइन किया कोलकाता से। नहीं नहीं सर, ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा ना। देखिए हमारे विजनरी और इंस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, जिनके नेतृत्व में आज 140 करोड़ लोगों का देश सारी दुनिया में चल रहा है। आज जो भारत बोलता है वो दुनिया सुनती है। और उनके नेतृत्व में जो पीएसयू चल रहे हैं, वो पिछले 11 साल में पीएसयू की जो दशा और दिशा बदली है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को और अपने इन्वेस्टर को एक काफी हद तक रिटर्न किया है। इसलिए पीएसयू कंपनी की एजीएम इसलिए हम लोग अटेंड करते हैं। और मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीसी मीटिंग कंटिन्यू रखिएगा। अगर गवर्नमेंट 25 सितंबर को नॉर्म भी चेंज करती है तो वीसी मीटिंग कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि देखिए आप दिल्ली में, हम लोग कलकत्ता में हैं, तो आपसे रूबरू हो सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नमस्कार कर सकते हैं। इसलिए और पीएसयू का इसलिए करते हैं कि सर जो हमारी कंपनी है ना, उसकी 60 से 74% होल्डिंग हमारी महामहिम के पास रहती है। और वो कंपनी ट्रांसपेरेंट, डेडिकेटेड और स्मूथ मैनर में चलती है। उसमें कोई लालागिरी नहीं है, बनियागिरी नहीं है। वो जो भी एकदम स्मूथ है, और सीएजी की रिपोर्ट ही सब कुछ है। तो इसलिए उसमें पूरा विश्वास है। हम लोगों का जो 12 करोड़ जो आम निवेशक हैं, छोटे शेयर होल्डर, उनका पीएसयू में ज्यादा निवेशक है भरोसा सर। और सर अकाउंट्स पे जाने से पहले आप तो 2 साल से बोलते हैं मैं कलकत्ता आऊंगा, बट आप आते ही नहीं और मुलाकात ही नहीं होती। और जब मैं दिल्ली आता हूँ तो पता है, गुड़गांव फोन करने से पता लगता है कि आप या तो मीटिंग में बाहर गए हैं या आप टूर में हैं। तो एक कोई ऐसा निकालिए कि जिससे हम लोग आपसे रूबरू मिल सके सर। सर व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? क्योंकि रेलवे जो ना, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो अभी हमारे माननीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव साहब, उनके नेतृत्व में काफी विकास कर रहा है। मेट्रो में, वंदे भारत में, रेलवे का जाल पूरे देश में भी, जहाँ रेल नहीं पहुंच पा रही थी मिजोरम तक, वहां रेल पहुंच गई। तो उस दिशा में आपका क्या प्लान है कि हम कैसे भारतीय रेल को और विकास कराएंगे अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से? और सर कैसे हम जो ना अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आज के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है ना कि मेक इन इंडिया बाय एनी गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, उसके ऊपर लोगो, जैसे आपका लोगो लगेगा मेक इन इंडिया बाय राइट्स। तो आप एक्सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारी रेवेन्यू बढ़े, जीडीपी बढ़े, और हम अच्छा मुनाफा करें। क्योंकि द सन ऑफ दिस टॉयल स्वामी विवेकानंद सेज वर्क मोर, अर्न मोर, सेव मोर, पे मोर। तो उस पॉलिसी पे चलते हुए कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे एम्प्लॉयज को भी आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दे पाए और इन्वेस्टर को भी दे पाए।
उस दिशा में सोचिए सर। और हम ज्यादा से ज्यादा, और सर फ्यूचर प्लान क्या है, और सर ईएसजी का स्कोर बताइए। अगर हमारा ईएसजी स्कोर अच्छा है तो कोई ग्रीन बॉन्ड इशू करने का है क्या सर, लिस्ट कराने का, जिससे कि हमको पैसे की जरूरत हो तो मार्केट में नहीं जाना पड़े। अपना अगर ईएसजी स्कोर है तो उसका बॉन्ड इशू करने से पैसा आ जाएगा सर। और रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ रिन्यूएबल और या ग्रीन एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ाने का इरादा है क्या सर? And धन्यवाद। we wish to God that when we meet next, our price will be double, payout will be double, sir. And sir, last year 50 years आपकी यशस्वी लीडरशिप में बना था। आपने एक बात बोला था कि कुछ शेयरहोल्डर के लिए सोचेंगे, तो आपने कुछ सोचा नहीं सर। कुछ तो सोचिए कि 50 और 51 साल जीवन में एक बार आते हैं, और आप देखिए कितने भाग्यशाली हैं कि आपने दोनों एजीएम को चेयर किया है, और मुस्कुराते हुए और हंसते हुए किया है सर। तो यही आपकी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी चीज है जो आपसे लगाव रखती है, कि हम लोग बाकी मीटिंग छोड़ दे बट आपकी मीटिंग नहीं छोड़ते, कि आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए 1 to 1 जवाब देते हैं। ये नहीं कहते कि लास्ट में जवाब देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को माँ शारदीय नवरात्रा की बधाई देता हूँ, और आपको इस पूजा में कलकत्ता आने का इनवाइट करता हूँ कि आइए कलकत्ता की दुर्गा पूजा देखिए, जो यहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जैसे दिल्ली में नवरात्रा, महाराष्ट्र में गणेश चौथ, बंगाल में दुर्गा पूजा सर। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके नेतृत्व में कंपनी और तरक्की करे, जिससे खूब विकास होता है। थैंक यू सर, और मिलने का थोड़ा देखिएगा कि मिल सके। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपकी बातों से मेरी हिम्मत और एनर्जी और हमारी टीम की हिम्मत और भी बढ़ जाती है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह आपसे मुलाकात हो। हमारा फ्यूचर प्लान ना केवल हर सेक्टर में, जिस तरह से आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तमाम सेक्टर में कैपेक्स का बजट में ग्रांट है, और हमारी एक इसलिए यूनिक पोजीशन है कि हम तमाम एरियाज में, रेलवे में, हाईवे, बिल्डिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट, सभी में हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं। हम लोग 1 ऑर्डर अ डे करते रहेंगे, मेंटेन करेंगे स्ट्राइक रेट को। रेलवे के जैसे एक्सपेंशन प्लान हो रहे हैं, हम नए नए कॉरिडोर की स्टडी कर रहे हैं, अलाइनमेंट स्टडी, सर्वेज, और हम रेलवे के वेरियस इनिशिएटिव्स में भागीदार हैं, पार्टनर हैं, चाहे वो डिजाइन हो, सर्वे हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, इंस्पेक्शन के बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स में। और जो आपने पॉइंट बोला मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट का, आज हमारा ऑर्डर बुक पिछले 1 सवा साल में ही करीब 1400 करोड़ का एक्सपोर्ट का हो गया है। हमारे, जैसे मैंने कहा, 10 डीजल इंजन, हाई हॉर्स पावर डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ बीएलडब्ल्यू प्लांट वाराणसी में बन रहे हैं। हमारे कोच का एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो हमारे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बन रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके आएंगे, सो दैट जो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेक इन इंडिया वाला जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। जो आपका पॉइंट ग्रीन बॉन्ड का, आपका सजेशन डेफिनेटली वेल टेकन, वी विल सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा जो सब्सिडियरी है आरएमसीएल, भारतीय रेल के साथ जो हमारी सब्सिडियरी है आरएमसीएल, वो तमाम एरियाज में रिन्यूएबल पावर में, राउंड द क्लॉक पावर में, सोलर एनर्जी में बहुत सारे अवार्ड कर रहा है वर्क्स, उसको मॉनिटर कर रहा है। और ये जो नेट जीरो का भारतीय रेल का इनिशिएटिव है, उसमें आरएमसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपके एनकरेजमेंट का मनोज जी, और मुझे विश्वास है कि जरूर कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Satesh Kumari Neem. Please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा नाम सतेश कुमारी नेम है और मैं इस कंपनी की प्रारंभिक शेयर होल्डर हूँ। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। दूसरा, मैं सर ये 51 एजीएम और राइट्स के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सर, मैंने कुछ वर्षों से राइट्स के बदलाव को काफी करीब से देखा है, खास करके जब कंपनी रेलवे केंद्रित सलाहकार से बदलकर
अब एक मल्टी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रही है। सर, वर्ष 2025 के नतीजे और प्रदर्शन को समझने के बाद मुझे दो बातें बहुत खास लगी कि एक तो कंपनी अपनी कंसल्टेंसी सेगमेंट में बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है। दूसरा, जो बाकी सरकारी कंपनियों से बहुत अधिक है। दूसरा, राइट्स के पास कोई भी कर्ज नहीं है, जिससे कंपनी को आगे बढ़ने और किसी भी मुश्किल में संभलने की पूरी ताकत है। इस संदर्भ में सर मेरा एक सवाल है कि कंपनी अपने 50 साल के अनुभव और बिना कर्ज वाली स्थिति का उपयोग कैसे कर रही है, ताकि वो नई सेवाओं में और आगे बढ़ सके और अलग अलग क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। और आज हमारी तमाम कंसल्टेंसी पीएसयूज जो हैं और प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनियां हैं देश में, उसमें हमारी एक यूनिक पोजीशन है कि हम वी आर दी ओनली कंपनी जिसमें मल्टी सेक्टोरल प्रेजेंस है। हम करीबन 700 से ज्यादा ऑर्डर देश विदेश में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 700 प्लस ऑर्डर्स कवरिंग तमाम सेक्टर, हर सेक्टर को। और जो हमारा ये 51 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है देश में विदेश में, हमने हजारों से ज्यादा ऑर्डर्स किए हैं। तो अब नेक्स्ट 50 ईयर्स में हमारा जो विजन है कि इस एक्सपीरियंस को हर सेक्टर में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने, हमारी टीम ने और राइट्स एज अ कंपनी ने गेन किया है, उसको आप सुनते होंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी और एआई का जो इंडक्शन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी और एआई को हम कैसे हमारे जो एक्सपीरियंस है डिजाइन के, रिपोर्ट्स के, सर्वे के, डीपीआर के, उसको कैसे दोनों का मेल करके समागम करके लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में हमारे क्लाइंट्स को, स्टेक होल्डर्स को दे पाए। तो इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई, इसके लिए हमने बहुत ही एकदम एक फोकस्ड मुहिम शुरू की है एआई रेडी करके। और हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पर अब वर्क कर रहे हैं, जो डाउन द लाइन एक ऑपरेटिव होगा। हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम हमने अभिकल्प रखा है, जिसमें हम अपने हिस्टोरिकल लेगेसी एक्सपीरियंस और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दोनों का एक समागम कर पाए। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट विजन है मूविंग फॉरवर्ड। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Anil Babubhai Mehta. Please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Hello, am I audible? जी नमस्कार, यू ऑडिबल, गो अहेड अनिल जी। Thank you. Good afternoon, sir. This is Anil Mehta. I attend this meeting from Mumbai. Sir, from our side, I have to say that due to this trade war and presently repo rate and presently change in the GST slab rate, what's the growth can we expect in our current FY 2025-26? With this, we are supporting all the resolution and thanks to the Secretarial Department for the cooperation and support. Thank you and all the best for the bright future of our company. Thank you, Anil ji. You see, this year we are definitely focused on improved execution with the large order book that we ended the previous year. And we are confident that we will definitely show you appreciable growth in the range of about that's our expectation, that we should be able to touch a double-digit growth with the not only maintaining getting fresh orders, but improved execution on the largest ever order book that we got at the end of the previous financial year. So we are quite confident that this entire FY we should be able to execute our domestic orders, our export orders, and we should be able to show you a healthy aiming for a double-digit growth on the top line. Thank you. I invite our next speaker shareholder, Sarvajit Singh, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question.
Hello, Chairman sir. Can you hear my voice? Yes, yes. Good afternoon. Go ahead, Sarvjit. Go ahead. Chairman sir, first of all, good afternoon to you, all the board of directors, all the staff of Rights Limited and my co-fellow shareholder. सर, जिस तरीके से आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कंपनी के बारे में बताया और सर जिस हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सर आप एक एक स्पीकर का सर आप स्पीकर सुन रहे हैं, ये सर एक बहुत अच्छी चीज है सर जो आप लोगों ने आज दिखाई है। बाकी चेयरमैन सर थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा सर, हो सके तो सर इस चीज को प्रेफरेंस पे जरूर रखिएगा। सर अभी एक कोरोना काल जा चुका है सर, 2019 से लेके 2025 तक सर परेशान हो गए हैं इन तारों के जरिए जुड़ जुड़ के आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि सर ये एनएसडीएल और सीडीएसएल इतनी भटकती हुई चीज है कि सर ये 22 तारीख 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक इनके सर पे इतने बादल फटते हैं कि कभी सीडीएसएल नहीं चलता, कभी एनएसडीएल नहीं चलता। ये सर परेशान हो गए हैं हम लोग सर। अगर हो सके तो अगले साल सर एक फिजिकल एजीएम या सर हाइब्रिड एजीएम का आगाज करिए। और सर आप लोग तो सर वैसे ही एक सरकारी कंपनी है सर, अगर आप देखें बजाज ग्रुप जो है सर वो इतना बड़ा ग्रुप है सर, उनकी सारी की सारी एजीएम्स पूरी सर जितनी 5 से 7 कंपनियां उनकी सर सारी फिजिकल मीटिंग्स होती हैं। तो सर इस चीज को अगर डेली बेस्ड आप अगर सरकारी कंपनी से अगर करेंगे तो सर ये एक बहुत बड़ा आगाज होगा सारी की सारी कंपनीज के लिए। हो सके तो सर इस चीज को जरूर प्रेफरेंस करिए। बाकी सर आपके सीएस और मॉडरेटर का सर हम धन्यवाद करना चाहेंगे सर, जिन्होंने हमें आपके सामने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। बहुत बहुत धन्यवाद सरजीत सिंह, आपका एनकरेजमेंट और काइंड वर्ड्स बहुत बहुत मायने रखता है, और आपका सजेशन इज डेफिनेटली वेल टेकन। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Tapan Jain, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Tapan Jain, please unmute your audio and video and proceed with your question. हेलो। यस, गुड हेलो। आफ्टरनून। गो अहेड। हेलो। जी नमस्कार, गो अहेड। हाँ, नमस्कार सर। चेयरमैन सर नमस्कार। मैं तपन जैन नई दिल्ली से। जी नमस्कार तपन जी, हाँ, बताइए। चेयरमैन सर आपकी स्पीच सुनी, बहुत अच्छा लगा। आपने कंपनी के भविष्य वर्तमान के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर मैं आज के सभी रेगुलेशन का समर्थन करता हूँ और आगे कामना करता हूँ कि हमारी कंपनी अच्छी तरक्की करे, ऐसी कामना करता हूँ। सर हमारी कंपनी अगले 5 साल में क्या रोड मैप है, बताइए सर। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे वीसी के माध्यम से जोड़ा, और आगे आने वाले सभी फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, हम आपके काइंड वर्ड्स का। और जैसा हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं कि आगे आने वाले ईयर्स में आप ग्रोथ जरूर देखेंगे। हमने अब रीस्ट्रेटेजाइज पिछले 1 डेढ़ साल जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजी को रीबिल्ड किया कंपटीशन को हेड ऑन लेने के लिए, और जिस तरह से हम ग्लोबली भी अब और भी नए नए ज्योग्राफीज में एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस तरह के हम ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं, तो अब डेफिनेटली अब केवल इस साल से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा, ना केवल फर्दर ऑर्डर बुक में बल्कि रेवेन्यू में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके काइंड वर्ड्स का। Thank you. Our next speaker shareholder is Roop Singh. Please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Roop Singh, please unmute your audio and video and proceed with your question. हेलो। या गो हेलो अहेड। सर। सर पूरी राइट टीम को बधाई, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक सबसे बड़ी 8,877 करोड़ की ऑर्डर बुक हासिल की है, और हर एक दिन ऑर्डर जैसी पोजीशन बनाई हुई है। जैसा कि सर आपने लास्ट ईयर अब एजीएम के अंदर बोला था कि हम हमारी कोशिश रहेगी हम हर एक दिन ऑर्डर जो है
वो ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे। ऑर्डर बुक में सर जो इतनी बढ़ोतरी हुई है वह कंपनी की मजबूती को दिखा रहा है। मुझे राइट्स जैसी नवरत्न कंपनी के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे बात कर कर सर मुझे खुशी हो रही है। सर क्या मैनेजमेंट बता सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, और कंपनी इस ऑर्डर बुक का कितना फायदा उठाने जा रही है? थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी रूप सिंह जी। हम लोग अब बिल्कुल कमिटेड हैं कि आपको डेफिनेटली ऑन अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर FY26 में बिल्कुल कोशिश है कि आप एक डबल डिजिट ग्रोथ देख पाएं, और इस ग्रोथ को पूरी पूरी टीम हमारी आपके ब्लेसिंग्स के साथ लगी हुई है कि ऑन अ एनुअल बेसिस आप एक ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ टॉप लाइन में डबल डिजिट मिनिमम देख पाए। हमारे एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गए हैं, जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट का हिट हुआ था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हमें काफी हिट लेना पड़ा, वो करीब जो 100 करोड़ का हिट हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ही हुआ था। और क्वालिटी एश्योरेंस में भी जो हमारा हिट हुआ था, करीब 40 करोड़ का क्वालिटी एश्योरेंस में हिट हुआ था, ये करीब 150 करोड़, 140 करोड़ का हमने अब पूरा स्ट्रेटेजाइज करके ग्रोथ आपको इस साल दिखेगी, सो दैट ईयर ऑन ईयर आपको एक हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ FY26 में दिखे। Thank you. I now invite our next speaker shareholder, Chanderjit, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Chanderjit, please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and go ahead with your question. Please unmute your audio and video. Hello, am I हाँ, audible? yes जी, go ahead, चंद्रजीत जी, go ahead, I can Good hear. afternoon to Chairman Sir, the Board of Directors, and my fellow shareholders. Myself, Chandrajit, joining from Delhi. Sir, before I further proceed, I would like to thank our CS and the whole secretarial team for giving me a chance to speak and interact with our management. Sir, my question mostly covered by the other members, so I have no specific questions. But I thank you to giving us a healthy dividend of more than 11 rupees per share in last fiscal year. Sir, we have signed multiple MOUs with our infra and consulting project with domestic companies and as well as foreign companies. So, sir, what is the timeline for completion of such project? Like we have 2.9 million supervision projects in Guyana, and also we have the project of deployment of ELCO locomotives in Zimbabwe and Mozambique. तो क्या सर ये इसी फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर्स हमारे इनमें ट्रिकल इफेक्ट आएगा या इनमें टाइम लगेगा? थैंक टू यू सर। थैंक यू चंद्रजीत जी। ये जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे, ये बहुत गैप के बाद, हमें 3 साल से ऊपर के गैप के बाद पिछले साल मिले, और इसलिए हमारा पूरा फोकस था कि इसमें हम जल्द से जल्द एग्जीक्यूशन शुरू करें। मोजाम्बिक का ऑर्डर का आपको खुशी होगी सुन के, ऑलरेडी एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। पहले 2 लोकोमोटिव ऑलरेडी वहां पर शिप आउट हो गए हैं और कमीशन भी हो गए हैं, और उनमें बहुत ही, मतलब अभी रिसेंटली 10 दिन पहले वहां कमीशन हुए। बहुत हमको वहां से कॉम्प्लीमेंट्स और धन्यवाद मिले मोजाम्बिक रेलवे की तरफ से, और अगले लोकोमोटिव भी बन रहे हैं और शिपमेंट हो जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये 10 लोकोमोटिव जो हमारे BLW वाराणसी प्लांट पे बन रहे हैं, वो हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल में एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हमारे गुआना का भी जो ऑर्डर था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे भी कुछ महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी बहुत उसकी तारीफ मिली, जिससे हमारी टीम बहुत एनकरेज हुई, और अगले जो ऑर्डर मिला है, फ्रेश ऑर्डर, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, और एज पर बिल्कुल कमिटेड टाइमलाइंस हैं जो उस ऑर्डर के, उसमें हम लोग अचीव करेंगे। तो हमारे ये जो विदेश के ऑर्डर हैं, और जो आपने MOU कहा, हम लोग वेरियस MOUs भी साइन कर रहे हैं। हमने मिडिल ईस्ट में
एतिहाद रेल के साथ एक MOU लास्ट ईयर ही साइन किया था, लेट लास्ट ईयर, और उसके तहत हमें ऑलरेडी ऑर्डर मिलना, एक पहला काम हमें जॉर्डन में मिल गया, तो हम लोग ऑलरेडी काम विदेश में और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। Thank you. I invite our next speaker shareholder, Ankit Agarwal, to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question. Ankit Agarwal, please accept the prompt on your screen. Mr. Ankit Agarwal, I would request you to please accept the prompt on your screen, unmute your audio and video, and proceed with your question, sir. Mr. Ankit, please unmute your audio and video. As there is no response from the current speaker shareholder, we'll move on to the next speaker shareholder. That was the last speaker shareholder. I will request Company Secretary to take the proceeding further. Thank you, Yusuf. Dear shareholders, as the notice of AGM has already been circulated and the same may be taken as read, there is no adverse remark in the statutory auditor's report, and we have also received nil comments from the Controller and Auditor General of India. And the observation made by the secretarial auditor with respect to inadequacy of independent director, women director, separate meeting, they are self-explanatory, and management reply has been provided in the director's report. Further, the integrated annual report is also circulated to the shareholders, have addressed the comments of the auditors. Since this meeting is held through video conferencing mode, there is no requirement of putting the resolutions for proposal and seconding. However, I'll brief the members about the agenda set out in the notice. There are 10 agenda items for ordinary businesses and 6 special businesses. Now I read the ordinary businesses. Item number 1, to receive, consider and adopt the audited financial results, standalone and consolidated financial statements of the company for the year ended 31st March 2025, along with the director's report and auditor's report thereon. This is required to be passed as an ordinary resolution. Item number 2, to consider the first, second, and third interim dividend declared in the financial year 24-25, and to declare final dividend on the equity shares for the financial year ended 31st March 2025. This also requires passing the resolution as an ordinary resolution. Item number 3, to appoint a director in place of Sri Krishna Gopal Agrawal, DIN number 10239667, Director Finance, who retires by rotation as director and being eligible offers himself for reappointment. This resolution requires passing as an ordinary resolution. Item number 4, to authorize the board of directors of the company to fix the remuneration of statutory auditors to be appointed by the Controller and Auditor General for the financial year 25-26 in terms of the provisions of Section 142 of the Companies Act. CAG has appointed statutory auditors on rights. Thus, this also requires passing by as an ordinary resolution. Now I read the items which are listed for special business. Item number 5, to appoint Sri Likha Togu, DIN number 09470-640 as an independent director of the company. This requires approval of the shareholders as a special resolution. Next item, item number 6, to appoint Sri Rajbir Sharma, DIN number 1110-5411 as an independent director of the company.
This item requires approval of shareholders as a special resolution. Next item, to appoint Dr. Dineshanand Goswami ji, DIN number 093949294 as an independent director of the company. The proposal requires approval of shareholders as a special resolution. Item number 8, to appoint Srimati Purnima Karkekar, DIN number 11929004 as an independent director of the company. This proposal also requires approval of shareholders as a special resolution. Item number 9, to alter the article of association of the company. The proposal requires approval of shareholders as a special resolution. Item number 10, to appoint the appointment of Mrs. Agrawal S. and Associates Company Secretaries as Secretarial Auditor of the company for a period of 5 years. The item is listed for approval of shareholders as an ordinary resolution. Now I read the e-voting process. The e-voting shall remain open till an hour after conclusion of this meeting to enable the members who have not casted their vote earlier. The results of the voting shall be announced on or before 25th of September, and the same would be intimated to the stock exchanges and will also be uploaded on the website of the company. With this, I would like to thank all the shareholders for extending their support and taking the company forward. Now I request our Director of Finance, Shri K.G. Agrawal sir, to give his concluding remarks. Namaskar shareholders. At the outset, I express my gratitude to Ministry of Railways, President of India nominee, Shri Satish Singh sir, Executive Director Railway Board, all other shareholders of the company, auditors of the company, government nominee directors, independent directors, and functional directors of the company who have taken time to join this meeting. Further, I thank all of you for making this event a success. I now hereby declare this meeting as concluded. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. I thank each one of you for participating in 51st Annual General Meeting of RITES Limited, and those shareholders who have not cast their vote are requested to cast their vote electronically. Thank you.